friends, once again welcome to JX English and Motivation YouTube and Facebook channel. You are most welcome in my channel. Today friend, I'm going to talk with Jay and about English spoken. So दोस्तों, आज मैं जय के साथ अंग्रेजी के सीखने के बारे में बात करूंगा और उसने कैसे अंग्रेजी को कम दिनों में सीखा है उसके बारे में हम जानेंगे। सो आप इस वीडियो के अंत तक बने रहे और इनके बोले हुए उन हर एक बातों को आप सुने ताकि आप अपने लाइफ में इसे इस्तेमाल कर सके और आप भी अच्छे से अंग्रेजी बोल सके। सो चलिए हम सुनते हैं उनके सवाल के जवाब। Jay, I have so many questions for you, but I don't want to ask you more questions. But I have three questions for you, and from three questions I'm going to ask you. So you give your answer. So your answer may help many students, those who want to learn new language. Why should we learn English? If you ask me, sir, why we should learn English? So according to me, English is nowadays very important for every person. If you want to know more about the world and what is happening around the world, there are so many things around the world happen. If you ask what is happening in Russia and the other countries, so they use English to spread the news to around the world. Because around the world, every person knows at least a little much English. So English is really the mediator of connect the person. Yeah, connect the different type of culture and persons. By learning English, we can also know more about the world and different type of cultures, and also meet different types of peoples also. And by learning English, we can also make our knowledge more deeper. And so, what was the experience of learning English? It was a really good experience, sir. And in the starting, I was really afraid that how I will speak like the others. Everyone faced many problems in the beginning of everything. So I also faced many problems. But after joining your class, I also feel very glad, and I improve myself by learning from you. Okay, thank you. What is the importance of English according to you? As we all know, the users of multiple languages very important around the world. If we want to meet a different type of cultures, by learning, being able to speak a foreign language helps to make a real connection with the diverse cultures, places, and different type of lifestyles. By learning English, we can also connect through the different peoples around the world. And if we go to foreign country, so it's help us to also know more about their culture and places. If we go somewhere in foreign country, so it's definitely sure that we will find at least one person who understands English, so we don't face that much very problem. And if we notice around the world, many big universities and all media platforms, so that's why I think English is very important nowadays. So how many days did you take to learn English? If I tell you the truth, sir, after joining the class, before joining the class, I was not very confident in myself. But after joining your class, in at least only 1 month, sir. It takes me only 1 month to reach this level. What message would you like to give my viewers? So, as you all know, sir told me to give a message to you also. My message is that if you want to do something, guys, you should do hard work, do smart work, and always do hard work for what you want to achieve in your life. Thank you, Jayan, for sharing with me your beautiful journey of English. My blessing always with you. Do something great in your life. Don't be let down, because you can do something. We all are human beings. Those who has achieved their success, they also a man and human being. They also human being. So always appreciate yourself. Always you motivate yourself. If you invite the positivity, so positivity will come to your life.
if you invite the negativity, so negativity will come. So just select and delete all negative things from your mind and live with positive. Thank you so much. God bless you. So दोस्तों, ये हमारे साथ अभी जयंत था, जिन्होंने अपने बारे में बताया है कि उन्होंने कैसे अंग्रेजी को सीखा है, और हमने सुना है कि अंग्रेजी का महत्व क्या है। और आप भी प्रयास करें अंग्रेजी सीखने के लिए, क्योंकि अंग्रेजी सीखेंगे तभी आप कुछ चीज़ को मूव कर पाएंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप अंग्रेजी सीख जाएंगे तो आप महान बन जाएंगे, लेकिन ये है कि आप अंग्रेजी यदि सीखते हैं और बोलते हैं सो आपको एक नई रास्ता प्राप्त होता है, और आप अपने लाइफ में एक नई रास्ता को खोलते हैं। क्योंकि आजकल हम देखते हैं बिजनेसमैन हो या चाहे मेडिकल स्टाफ हो, चाहे कोई भी हो, उन हर एक लोगों को अंग्रेजी का ज़रूरत पड़ता है, और हायर स्टडी के लिए भी ज़रूरत पड़ता है। सो आप भी अंग्रेजी सीखें, और मैं कहूँगा कि जयंत जैसा नहीं, लेकिन जयंत से भी आप अच्छा बनने का प्रयास करें। आपके पास एक मौका है। समय, यदि आप सोचेंगे कि समय आपके लिए आएगा और एक समय आएगा जब आप करेंगे, सो ये बात आप अपने दिमाग से निकाल दे। समय कभी भी आपके लिए नहीं आएगा। समय अपने रास्ते पे है, आपको समय के साथ चलना है। सो आप समय के साथ चलते रहे और अपने काम मजबूती से करते रहे। आप भी एक दिन अपने आप को एक अच्छी जगह पे पाएंगे। सो आप लोग यदि मेरे YouTube चैनल में नए हैं सो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और यदि आपको नई वीडियो का नोटिफिकेशन चाहिए सो आप बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। और यदि आपको और कुछ चीज़ जानकारी चाहिए हमारे माध्यम से सो आप मुझे कमेंट्स भी कर सकते हैं, और कमेंट्स करने पर मैं आपका उस सवाल का जवाब देने का प्रयास करूँगा। नमस्कार।